Hello to all class 10 students. Students, today we are going to do exceptions of law of demand. In our last class we did a few of them, but today we are going to start from beginning, and these are exceptions of law of demand. Before going to exceptions of law of demand, I would like to just recall that what was law of demand. What was law of demand? Law of demand states that other things remaining constant, there is a negative relationship between demand and quantity, demanded and price, right? Negative relationship means when the price is high, the demand is low, and when the price is low, the demand is high. This is known as negative relationship. So this is law of demand says, again I'll repeat it, law of demand states that other things remaining constant, there is a negative relationship between price and quantity demanded. When I say negative relationship, that means when the price is high of a commodity, the demand for it, the quantity demanded for X is low. Or when the price of quantity falls, the demand for such good increases. This is known as negative relationship. जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, जो प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है. This is negative relationship. ये law of demand ये बोलता है law of demand. Now we are not doing law of demand right now. We are doing the exceptions to our law of demand. Now what are the exceptions to law of demand? पहले मीनिंग ये है कि एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है. लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि ऐसे कुछ कंडीशंस या ऐसे कुछ पॉइंट्स जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता. दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. व्हाट आर द सिचुएशंस, व्हाट आर द कंडीशंस वेयर लॉ ऑफ डिमांड फेल्स. ठीक है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस इज हाई, द डिमांड इज लो. व्हेन द प्राइस इज लो, द डिमांड इज हाई, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. तो कहां पे ऐसा नहीं होता है, मतलब कहां पे ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ती है या प्राइस घटने पे डिमांड घटती है. यूजुअली क्या होता है, यूजुअली अगर किसी चीज का प्राइस घटता है तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, मतलब कंज्यूमर्स उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं. या किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड को घटा दिया जाता है क्योंकि वो महंगी हो जाती है. लेकिन एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में वी रीड दोज थिंग्स, वो दोज कंडीशंस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, जहां पे ये लॉ फेल हो जाता है, बल्कि जहां पे क्या होने लगता है, प्राइस हाई होने पे डिमांड हाई हो जाती है और प्राइस लो होने पे डिमांड लो हो जाती है. सो वी आर गोइंग टू डू दीज 7 पॉइंट्स एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ 2021 also. So now first is ignorance. Now if you see in your books, पहला पॉइंट ignorance दिया होगा ना. ignorance क्या होता है, ignorance मतलब क्या होता है, जब लोगों को किसी चीज का ज्ञान ना हो, when the people are not aware. So how it works, ignorance से मतलब है when people think कि प्राइस अच्छे होने पे क्वालिटी भी अच्छी होगी. यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो प्राइस एंड क्वालिटी का रिलेशनशिप करने लगते हैं. मतलब ये है, they think they are under a ignorance that if the price of a commodity is high, the quality is also good. कई लोग ये सोचते हैं अगर किसी चीज का प्राइस बहुत ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, पर ऐसा हमेशा सही नहीं होता है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वेयर वी कैन से दैट प्राइस हाई होने पे जब लोग ये सोचते हैं कि क्वालिटी भी बेटर होगी तो वो लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ दोज गुड्स व्हिच हैव हायर प्राइसेस. सो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, इन दिस केस द प्राइस आर high and the demand is also increasing. The price is increasing, the demand is also increases. Why? Because the people are thinking that the high price means better quality. So here in the first point, in the point of ignorance, our law of demand fails. यहाँ पे हाई प्राइस होने पे डिमांड कम ना होकर के डिमांड बढ़ रही है क्योंकि लोग इस मिसकंसेप्शन में है that the high price leads to good quality. So now we have done this. Now the second one is speculative effects. What do you mean by terms speculative effects? Speculative effects वो होते हैं जिसमें कंज्यूमर सोचता है कि आने वाले टाइम पे प्राइसेस क्या होने वाले, बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं. If you think that the prices are about to rise in future, suppose the prices of petrol is about to rise in future, you have this idea or you have heard it from somewhere or you have expectation the price of petrol are going to rise after 2 or 3 days. So what you people are going to do? What the consumer are going to do? Consumer are going to purchase more and more oil, more and more petrol today only because they are in a speculative effect that there is going to be rise in the price. तो उन्होंने क्या किया, आज के ही प्राइस में, मतलब आज हाई प्राइस पे उन्होंने हाई डिमांड कर लिया क्योंकि उनको ये कहीं से पता लगा है या अंदाजा है कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. या क्या इसका उल्टा भी ले सकते हैं, अगर आपको ये अंदाजा है कि आने वाले टाइम में प्राइस पेट्रोल के घटने वाले हैं तो आप क्या करोगे, आज ही अपनी डिमांड को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, राइट,
ताकि आप क्या कर सको, बाद में हायर प्राइस में लोअर प्राइस में खरीद सको. सो दिस इज द अनदर पॉइंट वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट work. Speculative effect. Third is the Giffen's paradox. What is the Giffen paradox? Giffen paradox मतलब होते हैं, गिफन गुड्स मतलब होता है वो गुड्स जो इंफीरियर इन क्वालिटी है. इंफीरियर मतलब जो पुअर क्वालिटी के गुड्स होते हैं. देयर आर सम प्रोडक्ट्स विच आर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड दे आर कंज्यूम्ड बाय द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, जो कुछ खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें पुअर लोग यूज करते हैं. तो क्या होता है, जब इस तरह की चीजों का प्राइस, मतलब जब इंफीरियर गुड्स का या गिफन गुड्स का जब प्राइस क्या होता है, फॉल होता है, तो इनकी डिमांड भी गिर जाती है. ठीक है, जब गिफन गुड्स का प्राइस क्या होगा, व्हेन द गिफन गुड्स price fall, the demand also falls. क्योंकि इस तरह के गुड्स का जब प्राइस गिरता है तो जो पुअर लोग होते हैं उनको ये चीज सस्ती पड़ रही है तो उनके पास थोड़ा गुंजाइश बढ़ जाती है कुछ और खरीदने के लिए, तो इस तरह के गुड्स का डिमांड को घटा देते हैं और वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल बाजरा एक गिफन गुड या इंफीरियर गुड माना जाता है. जब बाजरा का प्राइस गिरेगा तो लोग उसकी डिमांड को भी घटा देंगे, ना कि बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको बाजरा सस्ता पड़ रहा है तो उनका कुछ पैसा बचेगा जिससे वो नॉर्मल गुड की तरफ, मतलब वीट या राइस की तरफ ट्रांसफर होंगे. सो दिस इज योर गिफन्स पैराडॉक्स. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस even when the price of the given good is falling, the demand for it is not rising, rather the demand for it is falling. तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, इसलिए हम इसे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. अनदर वन इज योर फियर ऑफ शॉर्टेज. कई बार क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये डर होता है दैट देयर इज गोइंग टू बी शॉर्टेज ऑफ सर्टेन गुड और सर्विसेज इन द नियर फ्यूचर. लाइक यू कैन सी द लाइव एग्जांपल ऑफ COVID-19. व्हाट इज हैपनिंग दीस डेज, पीपल हैव फियर इन देयर माइंड दैट देयर इज गोइंग टू बी शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स or necessity things. So what they are doing, they are purchasing the goods at higher prices and they are storing it there in their home so that they don't face any such shortage of such products. So what they are doing, at higher prices they are demanding more. And so this is what our exception, this is what the other exception point tells us, that at higher price the demand is rising, whereas what does the law of demand says, law of demand says higher price पे demand fall होती है. बट जब हमको fear of shortage होता है, हमको डर होता है कमी हो जाएगी किसी चीज की, तो हम लोग वहां पे क्या करने लगते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट चलते हैं एंड वी डिमांड हायर एट हायर प्राइस. सो दिस इज fear of shortage. Another one is a prestigious good. What are prestigious good? Prestigious good are those good which show your social status. You distinct from other people. So these are the goods which show your social status. Like for example, big luxurious cars, big bungalows, diamond jewelries. What happens in this case? In this case, people purchase these goods because they are of high quality, they are of high prices, and they show off to the other people that we are wearing so expensive diamond jewelry, or we have such a big luxurious car, such an expensive car. And they show it off and they try to show themselves different from the other people because they show off because they want to show that we have wealth, we are rich, we are wealthy, we can purchase these diamond jewelries, we can purchase this car. So in this case, the higher the price of diamond jewelry, the higher the price of the luxurious car, the more is the demand for these type of good. But these type of good are purchased by the particular class of the society, the elite class of the society, the rich class of the society, because it is among themselves, it is a fashion among themselves that they show off their riches to other people of their class only. So in this case, what is happening? In this case, the higher the price, the higher the demand for such goods. अगर diamond का price गिर जाए, तो the people of this class, they will not purchase these diamond because they are of low cost, because they cannot show themselves different from other people. They cannot show off their wealth if the price of the diamond falls. So if the price of the diamond falls, or if the price of the luxurious car fall, they are not going to purchase these types of goods, because in that case they are not able to show themselves different from other people because the price of those goods have fallen down. So in this case, when the price of luxurious cars or diamond jewelry falls down, they don't purchase, the demand also decreases. Whereas when the price of the diamond rises, or the price of the car, luxurious car rises, they like to purchase this because they are able to show, they are in position to show themselves different from the other people. The next is your conspicuous necessities. What are conspicuous necessities? Conspicuous necessities are those necessities which we have made our necessities. Actually, they are not very much required
to in our daily life, but now we are in habit of using them. Like for example, refrigerators and coolers, washing machines, ACs. These all are those things which earlier were considered to be luxurious good, but now we have made them necessities of our life. And even the price of these goods rises, even the price of refrigerator rise, even the price of washing machine rise, even the price of cooler or ACs rise. We do not decrease their demand because we have made these things a very important part of our life. We have made them the necessities rather than luxuries. Earlier they were considered to be luxuries, comfort, but now they are considered to be necessities of life. आप देख रहे होंगे कुछ पिछले कुछ सालों में वॉशिंग मशीन्स का भी प्राइस बढ़ा है, रेफ्रिजरेटर का भी प्राइस बढ़ा है, एसी का भी प्राइस बढ़ा है, लेकिन लोग टीवी का भी प्राइस बढ़ा है, लेकिन लोग उसे कभी भी खरीदते हैं क्योंकि लोगों ने उसको अब क्या बना लिया, अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना लिया है. सो दीज आर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेटर का, एसी का बढ़ रहा है, कूलर का बढ़ रहा है, वॉशिंग मशीन का बढ़ रहा है, बट पीपल, द डिमांड ऑफ पीपल इज ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट. सो हियर हायर द प्राइस, हायर द डिमांड is what going on here. The law of demand is failing. So these are this is another point, conspicuous necessities. Now another is bandwagon effect, and this is the last point, which is the exception of law of demand in your book. What is bandwagon effect? Bandwagon effect वो effect होता है जो आपकी पसंद के goods नहीं है, आप goods को खरीदते हो लेकिन वो आप अपनी पसंद से ना खरीद करके आप दूसरे को कॉपी करने के लिए उन goods को खरीदते हो, because you like the other person. You like the other person having that good, so you are influenced by that person and you want that product also. Like if one of your friend is having a mobile phone in class, so in class you have your friend is having a mobile phone, so you like him that he's having a mobile phone, and the other children are also influenced by him. So what you would like to do, you would like to copy that boy, you would like to have that mobile phone, so you will ask your parents to purchase a mobile phone for you. So here what is happening, you are getting influenced by some other person, so that's why your demand is increasing. Same another example can be this, that the people of underdeveloped country, they try to copy the fashion and the manner of the other people, manner of the developed people of the developed countries. They try to follow how the people of developed countries live, have a lifestyle. So they demand for those goods and services which are purchased by the people living in Western countries or richer countries. This is the habit of the people of living in underdeveloped and developing countries. They try to copy the pattern of life of the developed people of developed countries. So what they are doing, they are trying to copy the personality, the fashion, the manner of the other person. So this is bandwagon effect. So in this, the person is purchasing things not out of his real need or his choice, but he is influenced by some other person, so he is trying to copy him and he is purchasing those goods. So here even the price is high, he is going to copy him and his demand is going to high. Because the price is high, he is copying him for the sake of copying him, he is so influenced by him, he is increasing his demand. Even if the prices of such products are high, people like to purchase these goods and services. So this is the exception of law of demand. So in the case of this, the demand diagram is going to be like this. If you pay attention, see, this is Y and this is x-axis. Here we will show price and here we are going to show quantity. Let's do it on a whole page. So the diagram we are going to have proper diagram. So first of all, हम law of डिमांड का डायग्राम बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का. ये दो चीजें हमने पढ़ी. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है. मतलब ये है, प्राइस अगर हाई है किसी कमोडिटी का, P इज फॉर प्राइस, X क्या कमोडिटी है, अगर प्राइस हाई है, या आप सिंपल P ले लो, प्राइस हाई है तो डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, लो होगी. या प्राइस अगर लो है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, हाई होगी. ये तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है. बल्कि एक्सेप्शन केस में क्या होता है, एक्सेप्शन केस में, एक्सेप्शन का मतलब ही क्या होता है, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. और आप जानते हो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस हाई होने पे डिमांड लो होगी, प्राइस लो होने पे डिमांड हाई होगी. दिस इज this is the law of demand. But what does the exception says? Exception says जहां पे ये लॉ काम नहीं करेगा, मतलब लॉ ऑफ डिमांड जहां फेल हो जाएगा,
लॉ ऑफ डिमांड जहां पे काम नहीं करेगा वो क्या होगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, प्राइस इज गोइंग टू बी हाई, द डिमांड इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाई, और when the price is going to be low, the demand is also going to be low. So this is exception of law of demand. So we were doing diagram. So to make thing more clear to you, पहले हम law of demand का diagram बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे exception of law of demand का। तो law of demand के हिसाब से तो inverse relationship है, तो ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्राइस दिखा रहे हैं, ठीक है। ये प्राइस ले लेते हैं 10, 10, 20, 30, 40, ये प्राइस है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो हाई प्राइस पे हम लो डिमांड कर रहे हैं, हम 40 प्राइस पे सिर्फ 5 ही डिमांड कर रहे हैं, मतलब जब प्राइस 40 है तो हमारी ये क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5 है, जब प्राइस 30 है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 10 हो गई, जब प्राइस 20 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई 15 हो गई, और जब प्राइस 10 है तो हम 20 डिमांड कर रहे हैं। So here you can see when the price is falling down, when the price is falling down, the demand is increasing. So you are going to draw a line here. हम इसको DD नाम दे देते हैं, DD stands for demand curve। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड है, यहाँ पे हम इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, क्या रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, किस किस के बीच पे, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप के अलावा आप इसको जो दूसरा बोल सकते हो, बोल सकते हो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि उल्टा चलता है, एक चीज घटती है तो एक चीज बढ़ती है। ये तो हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम। नाउ अब हम बनाएंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का डायग्राम। अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देंगे, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें डायग्राम केस में क्या होने वाला है, इस केस में आपका प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगी, जैसे कि मैंने आपको जॉर के बारे में बताया। हम इसका डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हम मान के चलते हैं, ये डायग्राम बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, दिस इज योर क्वांटिटी, दिस इज योर प्राइस, राइट। हम प्राइस ऑफ x ले लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ x करेंगे, x मतलब कोई भी प्रोडक्ट जिसके बारे में जिसकी हम प्राइस ले रहे हैं, x पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है। तो 10 पे आपने 5 खरीदा, 20 पे आपने 15 खरीदा, 30 पे आपने 20 खरीदा, 40 प्राइस पे आपने 30 खरीदा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, लोअर द प्राइस लोअर द डिमांड, हायर द प्राइस हायर द डिमांड, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। जब एक चीज बढ़ रही है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है, जब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी भी घट रही है। ये आपका क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो जाता है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड उल्टा चल लग जाता है। सो हियर वी आर गोइंग टू करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा 10, 10, 20, 30, 40, 50 हमारा प्राइस है, और यहाँ पे हम ले लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे हमारा जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाएगी। सो एट 10 प्राइस वी हैव 5 डिमांड, 5 यूनिट्स वी आर परचेजिंग 5 यूनिट्स। सो 10 पे हम 5 खरीद रहे हैं, 20 पे वी आर परचेजिंग 15, 15. So at 30 we are purchasing 20, at 30 we are purchasing 20, at 40 we are purchasing, at price 40 हम ले रहे हैं 30, So if we join this,
dd. So ये क्या है? Upward sloping curve. Upward sloping curve है ये. With या positive slope कह सकते हो. This is also known as positive slope. Positive slope है इसकी यहाँ पे. Direct relationship show कर रहा है. तो here you can see that higher the price, higher the demand, and lower the price, lower the demand. So this is how we are going to draw the curve for the exceptions of law of demand. So children, I hope this is clear to you, and this chapter, your first chapter, theory of demand, is done here. It's finished here. You people are going to prepare here all the notes, all the important notes, as we have been doing in earlier class also, in class 9th also, and tomorrow we'll start with another chapter, that is elasticity of demand. So I hope these things are clear to you. So let's see you tomorrow with another video of elasticity of demand. Take care.